जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स सैटरडे स्पेशल। जनरल नारायण के साथ आज हम थोड़ी बात करेंगे यार। भारत कहाँ बैठ रहा है ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर का। मैंने दो तीन बारी आप लोगों को मैंने एक स्लाइड दिखाया है कि भाई ये इमर्ज हो रहा है, ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे जाके। ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो दुनिया का इमर्ज हो रहा है उसमें भारत की जगह निकलेगी, एंड कैसे निकलेगी, कहाँ निकलेगी, और भारत की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। वो बोलते हैं ना AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जगह पे कैसे पहुंचे हैं, कैसे इवॉल्व हुआ है, आज समझेंगे जनरल रायन के साथ। एंड वील गो थ्रू एरिया बाय एरिया दुनिया का, एंड वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन टू दैट एरिया। तो सर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू द शो। नमस्कार, जय भारतम। आदि, यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड सबको बता दूं कि वी विल सी हाउ द वर्ल्ड इज कमिंग बैक टू अ फुल सर्कल। जहां से शुरू हुआ था वहीं उसी जगह हम न्यू आगे ग्लोबल खड़े हो ऑर्डर जाएंगे। में वापस आ रहे हैं। मतलब 6 phases, 5 phases we have gone through. 6th phase is coming out and how we go about it. And so brief में बताता जाऊंगा. Aadi has made a beautiful collection of maps and other things. So then we will go through. समझाते चले जाऊंगा in simple words ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या था. So let's go through the first हाँ part. गाइज, आज एकदम ज्योग्राफी का सेशन है, तो इतना जरा मैप रीडिंग, मैप अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी, बिकॉज सी अंडरस्टैंड वन थिंग, जियो पॉलिटिक्स मीन्स मैप्स। ठीक ज्योग्राफी है। के ऊपर होता है. और हम्म, चलने से पहले एक बता दूं, हाँ जी, your बोलिए। geopolitics is governed by geoeconomics. Always remember the flag follows the silver. Silver in this case is geoeconomics. Means जहां से आपको पैसा बनता है, देशों को पैसा बनता है, वहीं पे जियोपॉलिटिक्स आता है और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपका जियो स्ट्रेटजी बनता है कि किस तरह से आप मेंटेन करेंगे उसको. दिस इज व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस ऑल अबाउट. जी एंड संक्षिप्त में, ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा कैसे कैसे. सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड. ये बड़ा क्लियर मैंने कई अपने टॉक्स में कहा हुआ है कि भाई हमारा ट्रेड जो था वेस्टर्न सिविलाइजेशंस जो थे उनके साथ, ईरान में, मेडिटेरेनियन सी के पास, सब तरफ, इट precedes the Silk Road by millennia. हजारों साल पहले हम ये ट्रेड करते थे. 2 पथ होते थे, जिसको पहला पथ हम कहते थे उत्तर पथ. उत्तर पथ वॉज द कॉन्टिनेंटल पाथ, जो बाय रोड जाता था कि नॉर्थ, जो कॉन्टिनेंटल इंडिया के नॉर्थ जितने भी किंगडम्स थे उनका रास्ता ऊपर का जो रेड लाइन दिखाया बाय रोड जाता था. और जो पेनिनसुलर इंडिया का ट्रेड था वो बाय सी जाता, और ये इसको कहा जाता था दक्षिण पथ. और ये जो राइट में इंडिया के पर्पल में दिखाया हुआ है ना, दिस इज नॉट द इंडस वैली जो गलत बोलते हैं लोग. दिस इज योर सरस्वती वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट. नेक्स्ट. सरस्वती वैली। यस, यस, तब का है. तो हमारा देख लो ट्रेड्स कहां कहां जाता था. इजिप्ट भी जाता था. रोमन एम्पायर जब बना था तब भी उनके साथ होता था. उनके पहले जो ग्रीक्स थे उनके साथ भी ट्रेड होता था. असीरियंस, अकेडियंस, बेबीलोन, सबके साथ. जब इजिप्ट में थे तो फेरोज ऑफ इजिप्ट होते थे, इस्लाम तो आया नहीं था. उन सब के साथ ट्रेड होता था. ठीक है. ओके. ये जो बता रहे हैं, शिप्स ट्रेवल्ड वेस्ट विद द मॉनसून विंड्स. नेक्स्ट स्लाइड. अभी आगे चल के आपको दिखाऊंगा. अभी देखो, जैसे जैसे ईस्ट में भी
किंगडम्स आने लगे, जैसे चीन का आया, उनका ट्रेड आया, उनका ट्रेड हमारे ट्रेड रूट्स के साथ मिल गया, क्योंकि चाइना से ही सिल्क का शुरू हुआ था, तो उसको सिल्क रूट कहा गया। सिल्क रूट कोई एक रास्ता नहीं है। जितना आप उत्तर पथ के सड़क देख रहे हो, जिस मार्ग से जा रहे हैं, ये सारा सिल्क रूट को बोलते थे। वो सिल्क रूट इसलिए हो गया क्योंकि चाइना वॉज दी फ्लेवर, चाइना को बढ़ाने के लिए सिल्क रूट हो गया। ये उल्टा है, हमारे ट्रेड रूट्स के साथ उनका ट्रेड रूट आके मिला है, और हमारा ट्रेड फिर ईस्ट के तरफ भी जाने लगा और वेस्ट की तरफ भी जाता था। ठीक है, नेक्स्ट। अभी ये हमको हमारे शिप्स जल्दी जाते थे, बहुत बड़े थे। वेस्ट के जो शिप्स आपने देखे होंगे, उसमें सेल्स जो लगता था, एक सिंगल मास्ट होता था जिसमें बड़ा मेन सेल होता था। अपने शिप में अगर कोची चले जाएं, बाकी जगह जाएं जहां पे इन्होंने अपने एंशिएंट मैरिटाइम शिप्स के बारे में डिटेल्स रखा हुआ है, पिक्चर्स रखे हैं, कोई पोर्ट्रेट्स रखे हैं, 3-3 मास्ट होते थे मेन, इतने बड़े बाप शिप्स होते थे, 3, और उसके अलावा छोटे सेल्स होते थे, ताकि आपका स्पीड बढ़े, रे। जल्दी जाएं और जल्दी आए। नेक्स्ट स्लाइड। ये है मौसम का असर, कि जब आपका अप्रैल टू सितंबर राइट पे दिखाया हवा किस तरफ जाता है, और नवंबर टू फरवरी हवा किस तरफ जाता है। ये ओके, डिक्टेट करता है आपका ट्रेड कैसे चलेगा, किधर जा सकते हो। आपको वेट करना पड़ता था आपका वेदर चेंज होने के लिए, जाने के लिए। तो इसीलिए आपको जगह जगह पे लोग जो थे, आपने जो ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स इंडिया के थे, हर जगह अपने बंदे बेस करके रखे हुए थे, कि अगर आपका शिप वहां पे रुकना है 2-3 महीने विंड का डायरेक्शन चेंज होने के लिए, तो आपको अपना सामान रखने के लिए, अपने बंदों को ठहरने के लिए जगह चाहिए। So that is why even now today in excavations as far as Greece, Iraq, सब जगह आपको आपके पॉटरी और आपके सील्स का आपको जगह मिल रहा है। जब एक्सकवेशंस कर रहे हैं, आपके फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं। इसी तरह से फुटप्रिंट्स होते थे तब, बिकॉज यू हैड टू वेट फॉर द विंड टू चेंज। सो दैट वाज द इम्पैक्ट। और देख लो कितना जाता था हमारा ट्रेड। नेक्स्ट। तो ये सॉरी। P1 था, जो पूरा इंडिया सेंट्रिक ट्रेड था। फिर जैसे जैसे बाय अबाउट द 13th सेंचुरी देख लो, नॉर्थ इंडिया गॉट कॉलोनाइज्ड बाय द मुस्लिम्स, चाइना वो स्टिल बुद्धिस्ट, एंड वाइट जो है वो क्रिश्चियन वर्ल्ड है। अभी भी आपका ट्रेड चल रहा है, लेकिन द क्वांटम ऑफ मैरिटाइम ट्रेड हमारा, फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड यू विल रियलाइज, हमारा फुटप्रिंट कम होने लगा है। ठीक है, तो जैसे जैसे इस्लामिक वर्ल्ड आया, एंड बिगेस्ट चेंज जो आया था वो था ब्रेकअप ऑफ मंगोल एम्पायर। करेक्ट। जब मंगोल एम्पायर था, नेक्स्ट स्लाइड। ये तो ऑफ कोर्स सिल्क रूट एंड स्पाइस रूट वो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट। बट इसमें आपको पता चलता है इससे सिल्क रूट इतना सा है। या मेन तो आपका ट्रेड है, मेन आपका ट्रेड है, बट नॉर्थ में आपका ट्रेड अभी उतना ज्यादा नहीं हो रहा था। नेक्स्ट। या अभी आप देखो, जैसे इल खानेट, गोल्डन होर्ड, दीज वर ऑल पार्ट ऑफ द मंगोल एम्पायर। जो होर्ड नाम है, it comes from the Mongolian term yurt. Yurt was the main tent where the chief used to place himself, and the color of the tent indicated the कौन था वहां पे। तो जो गोल्डन युर्त लगता था, उस टेंट के अराउंड, बड़े टेंट के अराउंड बाकी सब अपने टेंट्स लगाते थे, छोटे युर्त लगाते थे। वो युर्त से होर्ड आया वर्ड। If you look at the etymology of the word hoard, it comes from that. Okay, and they used to come in mass. तो वो होर्ड का उससे उन्होंने जोड़ के युर्त से होर्ड, एंड दैट वाज द मीनिंग दैट दे केम इन बिग मास। जब ये अपना
मंगोलियन एम्पायर टूटा तो प्रॉब्लम ये हुआ कि छोटे छोटे ट्राइब्स आ गए अलग अलग जगह पे. इट इज वेरी एविडेंट जब कैरावैन्स जाते थे तो दे वुड हैव पेड सम मनी for their security and protection so that the caravans can go through. Now the caravans had to go through multiple such tribal areas. So the trade became expensive, especially the Indian trade. Silk route was always by road, so it didn't make any difference, that much difference to them, तो वो चल ही रहा था. But Indian trade became expensive. Indian trade for ships also became expensive because अलग अलग Muslim kingdoms आ गए थे वहां पे and everybody used to charge. Now the what used to come from China, essentially silk and those bone china pottery and all, was very expensive, was only used by the aristocrats. The trade from India which went with spices, कपड़े जाते थे आपके, ज्वेल्स जाते थे, ज्वेलरी जाते थे आपका, वेसल्स जाते थे, अलग अलग पॉट्स आपके मेटलर्जी के वेसल्स जाते थे, that was used a lot by the common people. Now those became very expensive. Salt भी जाता था यहाँ से काफी सारा. It became very expensive. That led to the start for the search of a maritime route to India, not to China, maritime route to India. In the late 15th century, जब पोर्चुगल, स्पेन ये सारे कुछ चलने लगे, by default अमेरिका आ गया था, मिल गया उनको अमेरिका. Otherwise, everybody was going through searching for India. And that is how the name West Indies, and for Indonesia and other areas, the East Indies came into vogue. हाँ वही है ना सर, इंडोनेशिया, इंडिया ऑफ साउथ ईस्ट एशिया. Yeah, they were all looking for India. हाँ. Because you controlled, they knew you were the hub of the trade, you controlled everything. डी बियर्स के माइंस वगैरह अफ्रीका के तो बाद में आए थे, आपके माइंस थे फॉर द डायमंड एंड ऑल. गोल्ड आपके यहाँ से जाता था, सिल्वर जाता था, ऑल काइंड्स ऑफ रूबी, सफायर, जेम्स यूज्ड टू गो फ्रॉम हियर. योर मेटलर्जी वाज वर्ल्ड क्लास. यहाँ से कॉपी करके आप, द इस्लाम स्टार्टेड द Damascus shield and Damascus sword and all that technology was from here, from India, which went. Okay, everything, whatever was needed there, everything was coming from here, not restricted to the aristocratic class, for all the people. And that is why it came as a search for India. Okay, so in this period you find it was essentially centered around, every Indian Ocean was the hub. यहाँ से जाता था towards Mediterranean Sea and to the Western Pacific. This was the P1, the golden era of the Indian Ocean region. But we, having been taken over by, just look at the Muslim spread, this is only it is not giving the correct picture. This is only giving the picture under the Khilji dynasty. Okay, the Islamic rule. After the Khilji dynasty, then they broke apart, and then you had the Vijayanagar kingdom and others which came up to most of South India, Hyderabad and South. वो तो सर, I mean, yeah, वो तो आपका भारत का सेमेंटिक्स हो गया ना. हाँ जी. बट इसके अंदर सर, can I just ask you here, क्योंकि हम लोग 1335 का नीचे लिखा हुआ इस्लामिक वर्ल्ड एंड ट्रेड, उसके उस टाइम की बात कर रहे हैं. उस टाइम पे जो आपका द कनेक्शन विद द अमेरिकास, जो कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका है, नॉर्थ एंड साउथ मिला के, इतना अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था क्रॉस अटलांटिक, राइट? तो इसके अंदर भी अमेरिकास का, as far as the world island is concerned, that is the Eurasian African area was concerned, अमेरिकास तो किसी को पता भी नहीं था कि है वहां पे कुछ. There was no trade. Transatlantic, there was no trade. Trans-Pacific, there was no trade. The trade was from Indian Ocean through to the Mediterranean Sea and then going into Europe,
Indian Ocean and going to the Western Pacific. Like I mentioned, Transatlantic and Trans-Pacific बाद में आना शुरू हुआ, especially Transatlantic शुरू हुआ था when by default the Americas were discovered. The हाँ, वो तो Spanish आने को तो इंडिया आ रहा था, वो वहां आने के चले लिए गया। they were searching for a route to India, हाँ जी, but they were not as, I would think, responsive about the they didn't know much about the direction and all. They were still now becoming ocean farers. Indians were ocean farers. They were now becoming ocean farers. So they moved west. And when they moved west, they hit the Americas. The Spanish hit South America. Amerigo Vespucci, Christopher Columbus landed in West Indies. It was actually Amerigo Vespucci who landed in main continental America. And वहां से अमेरिगो वेस्पुशी, अमेरिगो से नाम अमेरिका पड़ा है। जी। एक और चीज मेरे को आपसे पूछनी है सर, मैं आई जस्ट रिवाइंड इफ यू डोंट माइंड। ये वाला जो मैप है आपने मौसम का दिखाया है, अगर इसके अंदर देखिए आपको जो दिखता है लिटरली भारत का जो ईस्टर्न आर्म है और जो वेस्टर्न आर्म है, जो ट्रेड रूट्स आज बात कर रहे हैं सर, एग्जैक्टली वही हैं। या और ये एंशिएंट टाइम्स के हैं सर। यस, तो आईमेक और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक आप देख लीजिए, यहाँ पर भी वही आ रहा है। उस वक्त रशिया was not that well known about, but now you will get up to Vladivostok. सेम है ट्रेड रूट सर। Yes, 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 yes. Okay. नेक्स्ट चलते हैं। इसका नेक्स्ट जो इवेंट होता है, ये तो बताया मैंने, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाज इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन गया, इंडियन ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक गया। यू गेट द हिंट। अब जो आ रहा है आईपीआर एंड आईमेक एंड एवरीथिंग इज इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न पैसिफिक, इंडियन ओशन एंड मेडिटेरेनियन। ओके, नेक्स्ट। Now we know how we got colonized by the Britishers, so I won't talk about that. But in this period, this is the phase 2, when you went extended from the Indian Ocean to the Mediterranean, and while you can say Eastern Atlantic, it was basically the Celtic Sea and English Channel. Celtic Sea is next to the French coast, and then you go to the English Channel. Next slide. So when you came to around the late 19th century, this was the spread of the British Empire in the 19th century. 18th century. Abhi tak the Americans had not broken off from them. हाँ, अभी वो 1790s के बाद 1776 and all, ये अभी उसके पहले ये था इनका spread. Okay, why was this? Americas, so they found it by default, so they all went there and British colonized it, and Canada's bhi chale gaye. You got Brazil वगैरह, when they got to know all these people are going to all over the places, तो ये became a sort of a prosperity sphere, but it was more with the Spanish, and they had defeated the Spanish Armada. China was also there, where everybody was dominating and trying to gain all these areas. The Dutch were there in the East Indies, as they called it. That is the islands, archipelago of Indonesia and all these places were the Dutch East Indies. But amongst all these, the British had always held that the jewel in the crown, its prized possession, was Bharat. कि यहाँ से सब कुछ मिलता था उसको, यहाँ से रिसोर्स भी मिलता था, ज्वेल्स, जेम्स. It was after they colonized all these African places and all, then they went in and then they found, and then you found the mining and resources and everything. I call it the rape of resources of Africa happened. जो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी चल रहा है.
So this was the period for their domination at that time, and they took those areas. When you look at the Arabian Peninsula, Oman, UAE, Yemen, Egypt, then that portion of corner of Iraq, those areas, Iran also उनके generally protectorate में था, which controlled their shipping routes. वो तो स्ट्रेटेजिक यमन पॉइंट्स है का ना सर. यमन का एडन जो था, इट वाज अ वेरी क्रिटिकल पोर्ट फॉर देम. गल्फ ऑफ बाबल एडन मंदेब के पास वगैरह. आता था. Okay. And of course, by the 19th century, they had made the Suez Canal in the 19th century, the French and the British, to cut down. Otherwise, everybody had to go round South Africa, which was the Cape of Good Hope. And hence, these South Africa had to be taken control of. Like I said, the flag follows the silver. सिल्वर आ गया, सिल्वर को लेके जाने के लिए जो रास्ता था मैरीटाइम रूट में, वो सारे जगह आपने कब्जा करके रखना. स्पाइसेस इंडिया से और ईस्ट इंडीज से आता था, तो ये सारे के ऊपर कब्जा करके रखना था फॉर योर पेपर ट्रेड एंड स्पाइस ट्रेड एंड ओके. ये हंकी डोरी चलता रहा इनका इस तरह से. ऑफ कोर्स दे लॉस्ट द अमेरिकन्स, दे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उनके हाथ से चला गया, लेकिन इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. नेक्स्ट. या अभी क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी अमेरिका चला गया हाथ से. एंड देन यू सी द छोटा छोटा स्निपेट्स ऑफ वेयर दे आर. You are in Canada, in bits and pieces in Africa, India is there, and Australia is there. चाइना में उनका दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज हैड कम इन, 7-8 कंट्रीज हैड कम इनटू चाइना एट दैट टाइम. ठीक है. सो नेक्स्ट, नाउ कम्स द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. And it was the first world war. By then what had happened, you had squeezed India dry. इंडिया का जितना कुछ आप स्क्वीज करके निकाल सकते थे खत्म कर दिया था. एंड यू हैड बिकम अ कैप्टिव मार्केट एंड अ कैप्टिव प्लेस फ्रॉम वेयर द रिसोर्स लाइक द अफ्रीका वाज रिसोर्स टू बी टेकन प्लेस. Like if you go back in history and read, Google it, the forced indigo markets and all for their kapda, forced cotton, so that cotton could be taken there for their industry. So whatever was needed for them in their industry for making things used to be sourced from India, and Australia of course was there, and Africa, and these became the captive markets. And then comes the First World War. So First World War ke pehle you saw the gradual rise of USA and the other European powers. And because they also, other European powers also had the colony. By the way, United States also had colonies. Okay, Philippines was its colony. Yeah, they had defeated the Spanish. Philippines, Nicaragua, उरुग्वे एंड वन अदर. ये पूरा वेस्ट इंडीज तो पूरा इनका था. सर एको आ रहा है, थोड़ा सा स्पीकर आगे कर लेंगे प्लीज. तो so what happened was that the colonies became destitute. So to get a बंदों के पास अगर आप captive market रखे थे, the captive market was okay till such time you had something available in your hand to sell. जो है कुछ. So now the trade started with the Americans and it became the P3 Transatlantic. Shift. You were a captive resource, you industrialized, and now became transatlantic trade. देखो पैसे वहां थे, आपके कॉलोनीज को आपने फक्कड़ बना दिया था, उनके पास पैसे नहीं थे. And in any case in India we had started that अपना स्वदेशी movement going against whatever was being made. But that apart, except for the royalty and a few people who were the brown sahibs, others didn't have that kind of money to buy the Western items. So that starts your transatlantic. ठीक है. So when you see carefully,
P2, P3. Compare it with P1. P1 lasted for millennia. It fell for different reasons, for rise of religions and making use of religions to conquer areas. But when you look at it geoeconomically, it lasted for millennia because there was security and growth for everybody. Regions had certain amount of stability and everybody could trade in whichever manner they wanted. There was no forced resource squeezing. It started with P2 and P3 destroyed everything. Now we come to next the P4, World War II. बिफोर सर इस जाने से पहले Yeah. मैं गाइस जरा देखिए, आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई, ये हम दुनिया की बात कर रहे हैं, इसमें आपको पता चलेगा दुनिया कैसे घूमी है. सो प्लीज लुक एट इट फ्रॉम दैट एंगल. आपको उस एंगल से देखना है इस चीज को कि आपका मतलब आपके जितने सर ने जैसे बताया पूरे पैसे हटा के, अभी वो पैसे हम लोग बोलते हैं ना ग्लोबल डीप स्टेट की, सर ने मैंने बात करी थी कि जो आपके पैसे चुराए थे वो अभी अटलांटिक की तरफ जा रहे हैं. सो जब आपके अटलांटिक की तरफ पैसे जा रहे हैं तो अटलांटिक वर्ल्ड ऑर्डर जहां पर आपका पूरा फंड गया है, वर्ल्ड ऑर्डर उस तरफ शिफ्ट हुआ है. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर. मेरे को ये लगा नहीं कि आया, ट्रांस अटलांटिक ट्रेड हो गया क्योंकि पैसा वहां था. आपसे पैसा निकल गए वहां, सारे पैसे उनके पास आ गए. अब खर्चा करके खरीदने के लिए पैसे यूनाइटेड स्टेट्स के पास था और कनाडा के पास था, तो अब ट्रांस अटलांटिक ट्रेड शुरू हो गया उनका. नेक्स्ट. या वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ कि ये जो पुराने एम्पायर्स वगैरह थे वो बिल्कुल ही फक्कड़ हो गए. खर्च बहुत हो गया पैसा उनका. एंड दे हैड नथिंग विद देम, स्पेशली द ब्रिटिश, क्योंकि वो होल्ड नहीं कर पाए. इतना ताकत नहीं था उनके पास बचा हुआ कि होल्ड कर. हमारा फॉर्चून भी था कि हमारे पास भी कुछ बता नहीं था क्योंकि हम तो बिल्कुल ही फक्कड़ हो रखे थे. बट यूएस केम अप एज the one power which was so strong that he was controlling both the transatlantic and the Pacific trade. Because Pacific में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप अगर कभी भी कोई मिलिट्री हिस्ट्री का पढ़ना चाहता है, यूरोप के अंदर एंड एज फार एज द मलेशिया एंड अदर प्लेस, मलेशिया वाज कंसर्न्ड, was British with other all their forces and everything were fighting Indians. Everybody was fighting. When you look at the Pacific, that under the Monroe Doctrine, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, was purely American effort. Island hopping, out and out American. उन्होंने एक कदम नहीं आने दिया ब्रिटिशर्स को इस तरफ अंदर. हाँ, ब्रिटिशर्स तो फिलीपीन से सारे भाग गए और बस खत्म. हाँ, वो तो सब खत्म हो गया. उनको तो दे लेफ्ट देम विद मलेशिया. तो इंडियन ओशन के साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ मलेशिया के पास रहो आप. बाकी सारा इलाका फाइटिंग अगेंस्ट द जापानीज वाज अ प्योर अमेरिकन एफर्ट. सो एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2, not only were they transatlantic because they had their base and footprint across the Atlantic in Europe, they held the Pacific also. कि भाई जो कुछ भी मदद वहां देना है, बिकॉज दे हैड टू रीबिल्ड. क्यों बाय द 50s द कॉलोनीज हैड बिकम इंडिपेंडेंट, लेकिन वो सारे फक्कड़ थे एंड कोल्ड वॉर शुरू हो चुका था. नाउ यू नीडेड पीपल टू स्टैंड विद यू. द अमेरिकन्स को चाहिए था कोई उनके साथ खड़ा हो सोवियत यूनियन को टक्कर देने के लिए. तो वेस्टर्न यूरोप को बिल्ड किया, असिस्ट किया बिल्ड करने में. और एशिया में द मेन पीपल whom they held their hand and supported were Japan, South Korea, Australia and New Zealand. So this was the transatlantic, trans-Pacific phase which was controlled totally by the Americans. US. But इसमें rest of Africa and Asia were essentially
part of the old architecture. So you were the market, and from you the resources were being taken. Like by the 50s ऑयल आ गया था मिडल ईस्ट में, तो मिडल ईस्ट से तेल लेना और अपना माल बेचना उनको. इंडिया में भी आई रिमेम्बर टिल 65 इन माय यंग एज, कार्लटेक्स, बर्मा शेल, ये सारे होते थे पेट्रोल वाले. you were getting a whole lot of American items also in the market, like Gold Key comics and all these used to be available, and a lot of American items which used to come in. वो अलग बात है, सबके पास उतने पैसे होते नहीं थे खरीदने के लिए, but you were getting it, and that was the background to protect your market. You went the totally the other way of trying to control the market and socialism, and you had your Hindustan Motors, जो लैंडमार्क कार होता था ब्रिटेन का, उसका बना के आपने एम्बेसडर बनाया, फिएट का कॉपी करके आपने लाके यहाँ पे प्रीमियर पद्मिनी शुरू किया. तो इस तरह से अपना कर रहा था. दैट अपार्ट, बट the whole world was divided into two parts, and the geoeconomics was controlled by the Americans in the trans-Pacific and trans-Atlantic stage. ये phase 3 था. यूनिपोलर मोमेंट हो गया ना सर? Yeah. No, not exactly unipolar. It was bipolar. Warsaw Pact was controlled totally by the Soviet Union. And बट उसका वो मैरिटाइम रीच नहीं था ना सोवियत यूनियन का इतना. उनका मैरिटाइम रीच, वो तो लैंड कॉन्टिनेंटली था. Warsaw Pact was limited to the Europe, Eastern Europe. और जो सुएज कैनाल था, जिसका कंट्रोल इजिप्ट के साथ था by the support of the Americans, ensured that the West Asia and North African states, as we see in the next slide, you will see a whole lot of wars taking place. So this was 1950 AD. Next. Now you see the cost of the structure that was taken over from the Britishers by the Americans. कितने casualties, क्या क्या हुआ, genocides, everything. Look at the fractious organization. If you look at Latin America, all weapons. So the way to control was through small wars, where you had, actually, because they were just two main forces standing against each other, the US led NATO versus the Soviet Union Warsaw Pact, and all these areas which were the resource areas, Latin America, Africa, Asia, यहाँ पे पूरा contest हुआ. Small wars. You became next. गाइज अगर सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइज, इसको जरा पॉज करके बाद में देखिएगा ये स्लाइड को. यू विल सी द कॉस्ट. आपको कॉस्ट दिखेगा एंड यू विल बी शॉक्ड. ठीक है, तो remember, like I told you, P1 was one where these things were not resorted to. All kingdoms had their own prosperity going. Whereas now you see where somebody wants, because there you were, while you Indian Ocean mein India dominated the trade, you did not want to dominate other people how they lived. Here you are wanting to dominate all the resources, everything. So look at what all has happened in these areas. Next. Yeah, next. ये तो ब्रॉड स्ट्रक्चर था इनके जो अलायंस में थे. नेक्स्ट. नाउ लुक एट देयर एक्सपेंशन एंड इन्वॉल्वमेंट. They have, like I said, flag follows the silver. Everywhere from where, which is of economic interest, geoeconomic interest to them, they have their bases, or these days they call it टेम्पररी बेस को लिली पैड्स बोलते हैं. ठीक है, टेम्पररी बेस को आजकल नाउ दे कॉल इट एज लिली पैड्स. लिली पैड्स मतलब इक्विपमेंट थोड़ा बहुत मॉथबॉल्ड करके रखे रहते हैं, एंड थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके द बेस इज मेंटेन्ड सो दैट इट कैन एट द कॉल अप
शॉर्ट नोटिस में द बेस कैन बिकम फंक्शनल एज अ परमानेंट बेस। तो इस तरह से लिली पैड्स आर डॉटिंग ऑल ओवर। 737 ये 2005 का था, आज की तारीख में 800 से ऊपर है। 826 bases, sir. Yeah. There are phenomenal amount of bases all over the world. Primarily because वो पहले मैप में जो दिखाया था, it is to control the resources and to make sure that it is a government which comes in place is pro you, pro your policies, so that you can have a market out there. It is just that. And that is the bane of actually the today's structure which is there, where you try to keep changing, and the Chinese have caught on to it. वो 3 warfares पूरा करते हैं to sort of subvert the masses to where their of thinking. Next. तो अभी देख लो इंटरवेंशंस कहां कहां नहीं हुए, देखो। The areas which they have taken it as this is going to be their area from where they will get the resources, किसी को छोड़ा है? किसी को नहीं छोड़ा है। छोटी बात कर रहे हो, When सर? you look at Latin America, Africa and the rest of Asia, which is not part of their alliances, किसी को नहीं छोड़ा. Even you have not been left. And let's be clear, even the Soviet Union didn't leave you. Everywhere where the strife is taking place is the struggle between the US and Soviet Union to get their sphere of influence going. So not only were you the resource source for resource for them, you were also the place where what the Americans in their jargon used to call small wars would take place. उनके लिए small wars होगा, हमारे लिए तो कितने लोग मारे गए यार. So this was how this order was being maintained. For the benefit of the few, the larger number of people were being suppressed. Now do you realize why, when you have come up, the global south stands with you? And you also can empathize and feel the pain of the global south, because you yourself are part of global south and you have been through that. Next. Okay, now what happened? Despite all these fires going on, they needed somebody to control Soviet Union on the eastern flank. And that is where came the rise of China. Along with China, they gave to Malaysia, Singapore, Thailand. So that is why in earlier talks, Self and Aadi keep telling that these were all aided. The Western Europe, all these were aided powers to come up. हमें कुछ aid नहीं मिला. We have come up despite all the pressures that have been put on us. That is the difference. So when this happened, the pivot, the center of gravity started shifting towards what is termed as Asia Pacific. The Europe का attention कम होने लगा. China centric होने लगा. Right? And that Obama had done that. And this was his pivot to Asia, was the pivot towards China. And he would have had his way with G2, Xi Jinping, and with Obama, but for at that time the State Department and DOD giving him a kick up his backside. That we will not go for a G2. We control the globe. China is not going to dictate to us. Next. Yeah, next. अब हुआ क्या? Yeah. Now we come to the main part. इसमें उसने 12 बताए हैं, मैंने इनको क्लब करके 6 स्टेप में लिया है. P5 पे पहुंच गए थे, एशिया पैसिफिक. But Xi Jinping bared his fangs too early. And he expanded. Even Martin stopped for that, put it for me in this reddish tone, the one belt, one road.
इतने पैसे खर्च कर दिए that it has led to an economic collapse. Nations के economic collapse को छोड़ो, which are part of BRI, चाइना का economic downslide शुरू. So before the Asia Pacific could stabilize, comes the rise of India despite all pressures. Okay. And so becomes the gradual shift, lack of trust. As far back as 2007, Shinzo Abe had wanted the Quad, and अपना Commodore Khurana, he had NMF में coined the phrase Indo-Pacific, which Shinzo Abe latched on to, and he started talking of the two oceans, Indo-Pacific, which found traction under अपना Trump. Because by then the friction between China and US had reached its peak, and it began with the trade war. The trade war, the collapse of BRI, and of course all the policies of Xi Jinping of going towards the Mao era led to the collapse of the Chinese economy, and it is still going down, and he actually doesn't know what to do, whom to blame, because he's the one who controlled all the shots. And with the rise in India comes this flux, which is now taking place, the churning, as seen with the war in Ukraine, the Israel-Hamas war, which is going on. And you suddenly find in all these changes, the one sane voice which is coming up, talking of stability, providing support to the global south, standing with the global south, telling them that we will give you the voice, is India, which was indicated by the importance and you could say the sweeping success of G20, which was held in India. And you brought in a voice to almost more than one third of the global south, which is Africa, into G20. 150 nations, as per the UN, are part of the global south. Africa has 55, or other count 56. So about 55 countries are part of Africa. They have no voice. In one stroke, you brought them to give the voice. And you have promised, and African Union has also promised, South Africa has promised, that in the next G20 summit in South Africa, Latin Americans are going to get a voice. That means the bulk, almost about 50 to 60% of your global south will start having a voice in G20, which is coming up as a prime counter to the UN का economic and social जो उनका जो economic department है, उसका prime challenger आ गया है आपका G20 based on India's Vasudhaiva Kutumbakam. Now, this is the current next. This is your P6. So in P6, you have gone from Indian Ocean, went towards Atlantic, came to Atlantic Pacific, came to Asia Pacific, and you have come back again to the Indian Ocean. World has come a full circle. Okay. And these are the key areas which at the moment are evolving. One is the Indian Ocean. Second is your Western Pacific. And most important, the North Atlantic area. Further north, Greenland Sea, Norwegian Sea. Why? Arctic route, which is emerging, Arctic route. And which is where is the importance of Russia. Just look at the map. If Russia is with you, the Arctic route is with you. The tree is controlled by you. आपने पूरा पेड़ पकड़ रखा है फिर तो. The tree of the world जिसको बोलोगे आप. Yes. Indian Ocean and Arctic route जो अभी मेल्ट हो रहा है ज्यादा और Arctic route निकल के आ रहा है because the Arctic route is the shortest route between Asia to Europe and America. इसमें उतना दिखता नहीं है ना, ग्लोब गोल है ना, तो जब यहां से आते हैं तो ऐसे घूम के आते हो, ऊपर से आते हैं तो छोटा आर्क बनता है. Just look at it as a sphere. It's a smaller arc coming from the north.
Now do you understand Vladivostok, Chennai, why it is important? That link. Okay. While I understand, आप देख लो इसका इंपॉर्टेंस, क्वाड है, ऑकस है, I2U2 है, IMEC है. IMEC is also very important for this. Like if you look at the olden map, you are going through the West Asia to the Mediterranean and then going towards Roman Empire and all, and now Europe. So IMEC is very crucial, and IMEC is not just meant for link to the Europe. IMEC is also meant to provide alternate source of economy for the Gulf Council, the Gulf countries. Because they are only resource driven, oil, gas. Now this was to provide them with alternate sources of technology and building up their economy, diversifying their economy. That is IMEC. So when you look at this, immediately you find in this global order centrality of the Indian Ocean, and it comes back to India, Bharat. Now do you realize why everywhere people are gunning for you? कि अगर ये टूटेगा तो आप ये अगला ऑर्डर आने में टाइम लगेगा, और ये अमेरिकन हेमिस्फीयर है, ये भी किसी तरह सबस्यूम हो जाएगा आपके साथ. बिकॉज वाइल अभी इसमें क्या है, नेटो इज ऑल्सो कीन टू हैव अ रोल. हर एवरी कंट्री देयर इज प्रोवाइड गिविंग आउट इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी. NATO would be more keen, to my understanding, to look at the northern Atlantic area. That is crucial for you for controlling the Arctic Ocean sea route. ठीक है. तो now की कैरेक्टरिस्टिक इसका ये है, ये अभी आप समझ लो कि दिस इज द P6 which is still evolving. ना ये तो फ्यूचर है सर, आने वाला है, बट आने को नहीं देने के लिए उन्होंने सब कुछ करना है. जो वेस्ट एंड इस्लामिस्ट थे, जिन्होंने वोक लिबरलिस्ट, फॉल्स लिबरलिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनका दबदबा रहा था ये सारे एरिया को दबाने के लिए, whether it be Africa, whether it be Latin America, whether it be Asia, even within North America and Europe, for the alternate contrarian views to come up, उसको दबाने के लिए, to control this whole पिछला architecture जो था इनका P5 का, and that ran from the Second World War till now, from the end of Second World War till now. So you can imagine how many decades have gone, how deep they have gone into the society, which is very evident when you see today when these people come out on the streets against Israel and pro-Hamas, the rallies in universities, in streets of USA, West, सब तरफ निकल के आ रहे हैं, which tells you the kind of hold, and Chinese have been riding on that for 3-4 decades now, and they have embedded themselves inside this very deeply. A lot of places they control the funding and the thinking. So while the West Americans may have been proud that McCarthyism stopped communism in China, in America, but unfortunately the wokeism brought back the extreme leftists, which are worse than communists, in your schools, colleges, and in your society. Okay. Chalo. So let us see step by step what are the characteristics of these. Next. So these are the traditional trade routes abhi hain, which is very similar. Only one which has been added is the INSTC. Otherwise, rest is very similar to what was there in P1. Nothing different. इसमें वो दिखाया नहीं है अभी. Just go back. जो अभी अफ्रीका से, मोजाम्बिक, टंजानिया वगैरह से हमको तेल वगैरह आना शुरू हो जाए, ऑयल एंड गैस. वहां के लिए आपने अजम्पशन आइलैंड में बेस तो बना लिया ना ऑलरेडी? नहीं, अभी तेल वेल आना शुरू होगा ना, तो the routes and all the links and all will be very similar, is very similar to what was there in P1. Next. Now the basic characteristic here,
We are pushing for partnership versus alliances, led alliances. Partnership is equal status for everybody. Alliances are led by a single power, which is where the Americans and the State Department is faltering. बहुत बड़ा falter हो रहा है. So regionally defined with regional powers reformed UN में हम बोल रहे हैं आना चाहिए, नहीं तो G20 को तो हमने अपग्रेड कर रखा है ताकि ग्लोबल साउथ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते. आई थिंक इट्स टाइम टू गेट इन नाउ along with Latin America to get in the southern Pacific islands. They are getting exploited either by the Australians and New Zealand or by the Chinese. So, Fiji and ये वो. Yeah, Tuvalu, Fiji, Vanuatu. Micronesia. Also to get a voice. Yeah, Polynesia, Micronesia, all these South Pacific nations also. I think next में जब वहां जाते हैं कि लैटिन अमेरिका को लाएंगे, लैटिन अमेरिका से वी मस्ट गेट दिस थिंग दैट वील गेट द साउथ पैसिफिक आल्सो. सो एटलीस्ट 30 साल तो लग जाएंगे, इफ नॉट मोर, फॉर योर कंप्लीट राइज and for the Indian Ocean to get back to its original status, and for you to be able to actualize what you're voicing, Vasudhaiva Kutumbakam. What was there in P1? That security and growth for all. Isme containment of PRC, I would say, China, but China under PRC. And you have to work a lot with Taiwan for them to change their thought process, because their thought process for this region aligns a lot with PRC. कोई अंतर नहीं है उनका. So that is critical. And their access, what they have formed, has to be weakened. Yeah. नहीं तो लड़ाइयां चलती रहेंगी आप. Okay. And I'm not saying कि आगे चल के लड़ाई कुछ नहीं होगा, जैसे हमने अपना सेट कर दिया था, लेकिन जब the Abrahamic religions came in, Jews didn't go to war, but the Christians and the Islam went to war. So you never know. That's a human frailty which is always there, how it will happen. But if you can avoid it for a long time, why not? Maritime led force by the US should be available. अभी इंडियन ओशन में कोई नहीं है. नहीं, बट उनका तो पूरा चेंज कर रहे हैं ना सर. बाबल के वहां पे बैठ रहे हैं. आपके अरेबियन सी इंडियन ओशन रीजन में उनका कोई फुटप्रिंट नहीं है अदर देन डिगो गार्सिया, which is a victualling base, and they are looking at you becoming the major victualling base. So regional control जो है, we have to look at who all should work together to control which all areas, और उनको help करो. Rather, that is what is partnership all about. नहीं तो लेड अलायंस होता है तो वो एक कापोदी टूटी कापी होता है, वो बताएगा कैसे करना. नेक्स्ट. सो की इज इंडियन ओशन, एंड इंडियन ओशन में भारत. योर P6 is almost a similar replica like P1. The only addition here is P1 के टाइम में यूरोप was in tribal areas, hunter gatherers, वहां कुछ नहीं था. Now Europe is also coming, and you need to have maritime cooperation. You need to have joint operational bases. Like we said, there is one person who is responsible for a particular region. You also have others who are there to help him. Like he would also be placing it in your area to help you. Now, what kind it should be, in what manner it should be, one step we have already done, especially in the maritime domain, where we have created the fusion center. It's there near Delhi. And you have liaison officers from all the other countries who are using this Indian Ocean region. And it gives you a clear maritime domain awareness. Picture. उसको भी तो वो किया है ना, मेडिटेरेनियन से एक्सपैंड कर रहे हैं ना, फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू द सी ऑफ जापान. You are asking them to fuse it with what is with the Western Pacific and towards the Mediterranean, so that you get a full picture available.
So that is one way. When you say joint operational bases, doesn't mean that I need to place troops there. Okay, minimum third carrier तो चाहिए ही चाहिए. कोई उसमें कोई शक Because ही नहीं है. I actually am pushing for 2-3 things. A, you need at least 4 carriers, 2 with the western, 2 with the eastern fleet, so that at any given point in time, one carrier of both is available. Aircraft carrier is available, even if one has to go for dry dock repairs. Convert Lakshadweep and Andaman and Nicobar as your 2 unsinkable aircraft carriers on the western and eastern side. Straight away. And especially very important for your Andaman and Nicobar area, because from Nicobar, your reach is there till the southern Indian Ocean. So that is very important. Nuclear submarines, I don't need to elaborate, you require it. Along with nuclear submarines, if you can have your air independent diesel electric submarines also, it increases their staying. Because basically problem ये होता है diesel electric को you has to come up to surface to charge his batteries. Charge. So staying power underwater becomes less. But if you have an air independent propulsion system, it has as good a staying power under water. अरिहंत नेक्स्ट सीरीज के अंदर है ना वो, सो आपका इंडिजिनसली हमने जो बनाया है एआईपी, वो अरिहंत की अभी नेक्स्ट सबमरीन जो अगले साल आ रही है. It increases your, it is slightly less costly than the nuclear submarines, and it increases your staying power. Thereafter, the staying power is equal to whatever you can carry and how long the people have been trained to stay underwater. Critical straits, you're already working with Indonesia, Philippines, and Vietnam to make sure that the antagonists don't create problems for you. Towards this end, Thailand has now come up with a new proposal of a land. Earlier they were wanting कि क्रा कैनाल बना देंगे क्रा इस्थमस में, बट वो उनके मिलिट्री को पसंद नहीं है, क्योंकि द सदर्न एरिया साउथ ऑफ वेयर क्रा कैनाल बनना है, दैट इज मुस्लिम प्रोडोमिनेंट, एंड दे फील कि वो दे विल ब्रेक अवे फ्रॉम इट. सो अभी एक दे ब्रॉट अप अ प्रपोजल. There are 2 ports, both on the Bay of Bengal and the Gulf of Thailand, and linked with rail and road system, intricate rail and road system. So the ships come and dock at the Bay of Bengal port, and from there all the your containers are unloaded, taken straight across to the Gulf of Thailand, and from there then the ships go. They claim it cuts down the time. I really don't know how many ships will be required, because if you have the very large carrier containers, VLCC जिसको बोलते हैं, the number of trains required will be quite a lot. Then you need to make sure that you have that handling capacity in the yards to be loading all those trains, the handling capacity in the railway stations. Will the lines have that handling capacity to take that number of trains? Let's see how it comes out. It's still just a proposal. There's a lot of work which needs to go in. I would go beyond 2+2, and I should say now we should look at 3+3 involvement in the complete region. Defense, diplomacy, and your economy, commerce, trade. Let's start talking all 3, and let's start not talk only about defense and diplomacy. Defense and diplomacy अभी हो गया है, 2+2 काफी set हो गया है. Let us bring in the third, your trade also is, would I say, to add to that. Next, in this Indian Ocean के बाद Western Pacific में stability बहुत important. The kind of things which are being done by China is not good for stability in the Western Pacific. So Japan, South Korea, Australia coordinate कर रहे हैं. Now AUKUS तो military wing है, but let us see कितना reach है, because it is more कि भाई Australia gets its nuclear submarine, but does it have that kind of force to stand up? Like I said, वो भी है ना सर. देखिए जापान एंड साउथ कोरिया, वैसे जापान तो खुद ही आर्म कर रहा है अपने आप. So Japan as it is becomes a
Pacific is still with the US, because that हाँ. thing Hmm. that looks at Pacific as its backwaters. But now they are talking and asking us to come in there, and we have not agreed. हाँ. And rightfully so. If it's your backwaters, then look after it yourself. And you have very many countries available out there. And एग्रीमेंट्स वगैरह हो चुके हैं अब कि मिलिट्री की रिक्वायरमेंट होगी तो आ जाएंगे. बट आई स्टिल से द स्टेबिलिटी हियर वेस्टर्न पैसिफिक इज quite important, because quite a lot of trade passes through this area. Yeah, next. Pacific Ocean and US. Like the Monroe Doctrine. Monroe Doctrine was essentially to the European powers at that time, because they were at war with Spain, US, and they wanted to tell them that Latin America and Pacific Ocean is their backyard. They will not accept anyone interfering in this area, and they would not interfere in the across Atlantic into Europe. That is why you find the hesitation for them to enter war in First World War. Almost in 1917, they didn't enter. Famous sinking of the Lusitania, and a lot of people say that Churchill had orchestrated that. That's hypothesis. And even in the First World War, till the Pearl Harbor, December 1941, they didn't enter. When they entered, they are not. Now they have a huge foothold in Europe. And the whole of the world island, they have a tremendous foothold, but they do not accept anybody else coming into the Pacific. That is why when they talk of Indo-Pacific also, they limit it to the Western Pacific. वो बाकी Pacific की बात नहीं करते. But Latin America, that is South America and the Caribbean, financially they are very vulnerable. They are not stable. Thanks to the fight in their backyard, American backyard, between US and the Soviet Union. उनके एक दूसरे के बैक रिबेल्स होते थे, लड़ाइयाँ चलती थी, कूज होते थे, सब कुछ होता था. And they controlled everything. And that is how they ended up being banana republics. And abhi they have, US is facing a lot of problems. Drugs, fentanyl वहीं से ही आता है through Mexico. Immigrants आते हैं यार हजारों किलोमीटर चल चल के to the Mexican border to get inside. So Brazil, Argentina combination with a strong navy, but Argentina का अपना problem है. Malvinas oblique Falklands. वो है, but they are still arming up ना. वो तो खरीद रहे हैं, काफी weapons खरीद रहे हैं, ये वो all that. खरीद रहे हैं, but वो उनका यूके के साथ वही है. They want UK out of their backyard. Similarly, Spain का है with UK to control the mouth of Gibraltar. They had a control on Morocco and they got hold of Gibraltar. And the British are still there in Gibraltar. It's a rocky place. There's nothing much, but it's a British spot which controlled the mouth of the entrance into the Mediterranean Sea from Atlantic. So there is a need for them to start linking up, and that is where I felt with other power centers, not just power centers of military or other things, even economic power centers. And that is where I felt this G20 May, when you said that next is May, Brazil will bring in Latin America, that and Mediterranean, Caribbean states. Caribbean states. That is where now you will find that they will start getting more and more support in the economic domain and the technical domain. Stability is very important out there. Next. यूरोप, वेल 2 कंट्री तो ले आए हैं रशिया के बॉर्डर में. पोलैंड को सोच रहे हैं. यूक्रेन वॉर तो स्टेलमेट हो गया है. लेट्स सी व्हाट इट कैन गेट. नाउ they have started producing weapons, but what has happened? Germany economy is broken. France अकेला पड़ गया है. There is nothing. He has something, but his economy is डेमोग्राफी है उसके पास. हाँ. UK, the economy is in doldrums.
Now, I2U2, IMEC, France is supporting. Let's see. France has been wanting for a long time क्वाड में जुड़ने के लिए, बट उसको यूएस आने नहीं देता है. ग्रीस, पोलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इनमें से ग्रीस इज वेरी कीन टू जॉइन अप विद अस इन द IMEC. It likes to be the connecting point, also one of the connecting points to Europe. फ्रांस के पास टेक्नोलॉजी है, डेमोग्राफिक्स है, but at the moment, let us see, because it's also on the boil, the pro-Hamas, pro-Palestinian agitators के साथ. So while he has that, he's not as bad economically as the other countries like Germany and Europe, but it's not easy because the Americans ने अभी तक भूले नहीं है कि नेटो में immediately ये जुड़ा नहीं था. Right? He came into NATO much later, and abhi bhi in NATO he tries to take an independent path. So Europe today is actually in a turmoil, as you can see. Now they are trying. Germany has come very harshly forward for all these the pro Hamas and anti-Semitic people कि उनका citizenship निकाल देंगे, अंदर नहीं आने देंगे, ये सब अब laws ला रहे हैं. Let's see. It will take a little while for Europe to stabilize. That's why we were saying that for this new global order to emerge, कम से कम 30 साल तो लग ही जाएंगे. At least 2-3 decades it will take. It will take time for Europe to stabilize. And which way does Russia go? You have to look at which way does Russia go. Next. So we come to Russia. You have तकरीबन 2 लड़ाइयां उसके डोर स्टेप पे ही हैं, because the war with Israel and other things is too close to his Caucasus and other places where the demographics are similar, and discontent उस जगह आ जाएगा उसका, तो he will have a problem. Dagestan, Chechnya, all these places, Tatarstan. Russia wants to influence Africa. Yeah. He would be able to get a lot of resources, but does he have the economic reach and heft? Because these people also know the history, that because of the fight between Soviet Union, Russia is the replication of Soviet Union in everybody's eyes. Russia and US, that all the fights and all the battles, all the coups, everything, all the problems that they are facing is because of that. So is Russia going to come with something new, something different? So that is a big question mark. China trust तो खत्म हो गया अभी उनका काफी, especially now the debt economics that they followed in the BRI, but काफी पकड़ है, साइड शो में जा रहा है in Africa, उसका influence कम हो रहा है in Africa. So I expect China to push something further in Africa. Russia has to be aware. ये ना हो कि चाइना उसके ऊपर पिगीबैक करके आए. So Russia का demographics is down the drain in any case. That's a problem. Big problem. This is a similar problem to what is going on in Europe also. So that is what is going to determine कि भाई आपका demographic challenge है, how are you going to fight that? Because if you have a demographic challenge, there will be people coming. If you have companies, they will bring in labor from outside. That leads to xenophobia. तो किस तरह से इस चैलेंज से उभर के आओगे आप? रिसोर्स रिच है, क्योंकि ये आई एम इंक्लूडिंग द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स एंड द काउकेसस विद देम. वो उसको अपना सॉफ्ट अंडरबेली, नियर अब्रॉड सब कुछ कहता है, सब कुछ कह ले, जो कह ले. That is one of the reasons why he would have preferred Azerbaijan to Armenia, because Azerbaijan तो next door है उसके, बिल्कुल shares the border with it.
not Armenia. Okay, so Azerbaijan, ये सारे सब हैं, रिसोर्स रिच हैं, बट इफ योर डेमोग्राफी इज अ चैलेंज, उसको तुम किस तरह से सॉल्व करते हो? आई डोंट थिंक रशिया ने अभी तक उस पर कोई थॉट दिया है, किस तरह से सॉर्ट आउट करें। क्या नेक्स्ट? अफ्रीका इज द नेक्स्ट बिग हैपनिंग प्लेस, और इसीलिए भारत उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, बिकॉज भारत एंड अफ्रीका, these are going to be the two main power centers at the later part of this century, जो मैं देख रहा हूं। गैस ऑयलिंग तो ला रहे हैं हम, वी आर हेल्पिंग देम फॉर लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसोर्स मैपिंग, मैनेजमेंट, सप्लाई चेन स्टेबिलिटी। व्हेन यू लुक एट दी वॉइसेस, दे प्रेफर हमारे कंपनीज को, क्योंकि वो कंपेयर करते हैं चाइनीज कंपनी से कि 100 बंदे हैं तो हमारे साथ होते हैं, बाकी 93 उनके होते हैं, ऑल हमारे बंदे लोअर अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर में ही रहते हैं। दे कंपेयर इट विद इंडिया। इंडिया में जब होता है तो उनके इंडिया के साथ होते हैं, 93 हमारे होते हैं अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट इज अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, मैनेजरियल, हायर मैनेजरियल, सीनियर मैनेजरियल, सब हमारे बंदे ट्रेन करके लाके खड़ा करते हैं कि भाई आगे चल के तुमने ये कंपनी चलाना है, कि जैसे एमएनसी चलेगा तो हमारे 5-7 बंदे रहेंगे और बाकी तुम्हारे चलाएंगे। तो वो उनको पसंद आ रहा है। दैट इज वाई यू फाइंड मोर एंड मोर अफ्रीकन यूनियन जो है आपके तरफ झुक रहा है कि यहाँ एक देश है जो मुझे कैपेसिटी डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट में मदद करने के लिए तैयार है। तो जब ये एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे हमारे साथ, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इस रीजन का बहुत तगड़ा हो जाएगा। इस्लामिज्म एक थ्रेट है जो नदर्न पोर्शन ऑफ अफ्रीका है, वहां पे ये एक मेजर थ्रेट है, इसको नकार नहीं सकते। सहारन एंड सब सहारन, सहेल एरिया वगैरह में ये है एक थ्रेट, इसको हमने मदद करके उनको इससे उभारना ठंडा करना है, ठंडा करना है उसको। या और ये इसीलिए अफ्रीकन यूनियन का मूव, मैं हर बार कहता हूं, बहुत सही मूव किया है। लैटिन अमेरिका का भी समय आएगा इसके अभी वहां बाद, पहुंचा नहीं है वो, इट्स नॉट दैट अभी पहुंचने में जियोपॉलिटिकली। उसको बहुत टाइम है। अफ्रीका पहुंच रहा है, अगले 30-40-50 साल के अंदर आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई सेड बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, ये हमारा जब आईओआर वाला रीजन P5 P6 स्टेबलाइज होगा, इन सबको साथ लेके चलेंगे तो ये P6 आपका कम से कम 1 मिलेनिया तो चलेगा ही चलेगा, अगर इसको ध्यान से चलाए तो। नेक्स्ट, ये है जिसको मैनेज करना, ही इज द जोकर इन द पैक। और जब मैं चाइना, हम चाइना बोलते हैं तो प्लीज रिमेंबर ताइवान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। साथ एब्सोल्युटली। सोच उनकी एक है, कोई अलग सोच नहीं है इनकी, और ये दोनों जगह डेमोग्राफिक डिक्लाइन में जा रहा है बुरी तरह से। सीसीपी तो कभी न कभी जाएगा, चाहे अंदर से सिविल वॉर हो या ना हो, जैसा हो वो जाएगा। इट हैज लिव्ड इट्स टाइम, ओके, बट ये जाए, सोच कहां बदला है? सोच तो वही है जो भी आएगा। हम डिसेंट्रलाइज, कलेक्टिव लीडरशिप, जो कुछ कह दो, जब तक ये टूट के अलग नहीं होता, आपका सिंकियांग अलग, तिब्बत अलग, प्रॉब्लम फिर भी रहेगा वेस्टर्न पैसिफिक में। जब तक ये सोच, बिकॉज हम 9 डैश लाइन बोलते हैं, 11 डैश लाइन तो ताइवान के चियांग काई शेक ने बनाया था, वो प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगा, उन्होंने ड्रॉप तो नहीं किया अभी तक। साउथ तिब्बत, लद्दाख, ये सब का क्लेम तो sun Yat-sen ने दिया था, जो चियांग काई शेक भी लेके चला है, वही ताइवान है, उन्होंने आज तक तो ड्रॉप नहीं किया है। तो प्रॉब्लम्स विल स्टिल बी देयर। तो दैट्स व्हाई आई सेड ये मैनेज करना है। हमारे साथ हमें रशिया की जरूरत पड़ेगी, उसमें क्या होगा, हम साउथ से मैनेज करेंगे, वो नॉर्थ से मैनेज करेंगे।
दोनों तरफ से जब मैनेज करोगे तो मैनेज होगा। ही इज अ जोकर इन द पैक, और बहुत बुरी तरह से यही पूरा फंड कर रहा है। सारी सोच यहीं से निकल के आ रही है, 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। जो भी हड़दंप मच रहा है सब तरफ, आपके देश के अंदर, जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो आपको यूरोप और अमेरिका में भी सारा कुछ दिख रहा है, प्रो पैलेस्टीन, ये वो सारा कुछ, ये इसकी सोच और इसकी स्ट्रैटेजी है। सोची समझी कि भाई चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड स्टेबल दिखे और नॉन चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड बिल्कुल बवाल मचा रहे हो। 3 वॉरफेयर स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए कह रहा हूं ये है जोकर इन द पैक, इसको कंटेन करना जरूरी है। नेक्स्ट, अब जो बच गए इसके अलावा ईरान है, पाकिस्तान है, टर्की है, कतार। सोच चाइना की फंडिंग कतार से, चाइना है, इंग्लैंड है। इंग्लैंड को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ हूँ, यूरोप से निकल गया हूँ, किसके साथ हूँ, क्या हूँ। उसका वेस्टर्न यूरोप जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस खत्म हो गया ना सर। वेस्टर्न यूरोप में ज्यादा ताकत हमने डिस्कस की भी किया था कि बचा नहीं, और यही है जहां पे हमास सपोर्टर सारे बैठे हुए हैं। यही जगह है जहां पे अलोंग विद यूरोप, अमेरिका ऑल्सो, वे जो वोक ब्रिगेड बोलते हैं, लिबरल्स बोलते हैं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट में बोलता हूँ, ये सारे भरे पड़े हैं वहीं पे, अलोंग विद इस्लामिस्ट। ये इलाका है। इनको जैसे मैंने बताया कि भाई कितने सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अभी तक सबको मिला हुआ है फंडिंग, पैसा, करो, सब कुछ। नाउ सडनली वो इतने जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे आपको। नेक्स्ट, तो अब चाइना को हिट करना, यूरोप और इसराइल का सोल्यूशन चाहिए, और इसराइल से ज्यादा इट इज द पैलेस्टीन स्टेट, कहाँ पे बनना है, क्या नहीं बनना है, स्टेबिलिटी लाना है इसराइल और पैलेस्टीन के, ये सॉल्व होना है। और ये सॉल्व होना है तो चाइना को कंटेन करना पड़ेगा। इसको कंटेन नहीं किया और वो लेफ्ट ओवर्स के 2-4 को कंटेन नहीं करे तो सोल्यूशन मिलना मुश्किल, नहीं आने देंगे, क्योंकि उनकी रेलेवेंस खत्म हो जाती है, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, जी से तो मिले थे, होल्ड मिल के ऑन, क्या अभी नहीं। मिल के क्या मिला, कुछ नहीं। आए, मिले, चले गए। इसके तो ऊपर वी विल आगे बात करेंगे। तो इसी में था कि स्टेबिलिटी के लिए in West Asia, which is going to connect from the Indian Ocean in towards Europe and other places, is there a need to redraw the borders of Greater West Asia, if I may say, Arab and West Asia? जैसे ये एक कर्नल रैल्फ पीटर्स ने बना के दिया था, ब्लड ब्रदर्स, रीड्रॉइंग द बॉर्डर्स। What would it be based on? Their tribal or religious loyalties? नेक्स्ट एक और भी बना था, दूसरा भी दिखा दो, या बर्नार्ड लुई ने बनाया था। नाउ विल इट वर्क? यू कांट से। द ब्रिट्स ट्राइड इट इन इंडिया। मैं रिलीजियस लाइंस की बात कर रहा हूं, इट्स फेल्ड। द नया स्टेट जो बनाया था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो रहा है, हमें पता ही नहीं है आगे 10 साल के अंदर किस शेप और साइज में रहेगा, यही नहीं पता, हाईली अनस्टेबल। इस तरह से रीड्रॉ करके, बाहर से हम रीड्रॉ करके, आर वी गोइंग टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन दिस रीजन, or let them decide for themselves between the two of them? Like one of the best redrawing of borders of Europe was the breakup of Czechoslovakia. Czechia alag hua, Slovakia alag hua. They have no problems. But look at what has happened when you broke up Yugoslavia. अभी तक नहीं खत्म हो।
अभी तक नहीं खत्म, बिकॉज देयर वाज अनदर रिलीजन इन बिटवीन कोसोवो में, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है. सो दीज आर सर्टन थिंग्स, इफ इट इज लेफ्ट, आई फील, to the people themselves to resolve and adjust the borders amongst themselves, or bring in what I term, what the Soviet Union used to do, reflexive control. You want them to do that, but you move them in a manner where they decide firmly that this is what is in their best interests. जी. That will last. That will last. बाहर से अगर हम करेंगे, I don't think it will last. So there is still work to be done to get to P6. ये ना सोचो कि P6 आ गया है, इतने जल्दी से P5 वाले छोड़ने नहीं वाले. See, the P2 came with colonization. P3 and P4 was readjustments within the western parts. P5 was also an adjustment within the western parts, bringing in China. Now this is a total reshaping back towards P1. वो इतने जल्दी नहीं होने देंगे, मगर अगर we succeed in this, we play our cards well, I feel P6 will again give a stable and a secure world and an opportunity for all to grow together. It will not be like the previous one, that one area of the globe is only for resources and captive market for the benefit of the few. It is what our vision is. Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Family में सबको इकट्ठा ग्रो करने का मौका मिलता है. And Sagar, which was for the region, will be for the greater group of everybody, security and growth for all. But work is not done. काम अभी शुरू हो रहा है. शुरू हो रहा है. शुरू बहुत हो टाइम है, रहा अभी बहुत टाइम है, समय लगेगा. इसीलिए you have to be resilient to face the challenges, and you have to face it maturely. Don't believe anything and everything which comes in social media. Be careful, and like I always advise, vote wisely. सर. But there ये will तो be multiple governments which will come before this fructifies. ये तो सर आपने मतलब बोलते हैं ना, आई थिंक सबके दिमाग उड़ गए हैं यहाँ पर. तो आई कैन सी द कमेंट्स कमिंग आउट. पीपल आर सेइंग यार ये हुआ क्या है. दिस इज अ टेरिफिक एपिसोड. सर मैं आपको ऑनर बोल रहा हूँ. रात को तो आई नो आपको मैं तंग करता हूँ, बट रात को नहीं करेंगे. नेक्स्ट वीक डे टाइम मेरे को आप बताइए, बिकॉज वी नीड टू गो थ्रू दीज क्वेश्चंस. We've already crossed 1 hour 23 minutes. It's quite a tough this thing. I will take the super chats, Okay. 5 6 7 सुपर चैट्स हैं. we'll take that right now. Guys, आप सबसे मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए. वेडनेसडे दोपहर में we will join in and we will continue this discussion. देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, I am not, सर मैं I mean, although मैं दिमाग काफी टाइम से इस चीज के ऊपर लगा रहा हूँ. सर से मैंने पूछ पूछ के सर का दिमाग खा के ये जो भी इकट्ठा करा है. एंड ट्रस्ट यू मी, आई नेवर थॉट ऑफ द कनेक्शंस जिस तरह से सर ने निकाले हैं. एंड मेरे को तो खुद इतने सवाल हैं एक एक चीज के ऊपर. तो आई एम गोना बी फर्स्ट आस्किंग क्वेश्चंस जो वेडनेसडे को सेशन करेंगे, बिकॉज दिस इज अ माइंड बॉगलिंग सिचुएशन जो हमने देखी है. गाइज आपको, आई नो लॉट ऑफ यू वर सेइंग मैप, ये आपको चाहिए. लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, बिकॉज देखो दिस इज आई डोंट वांट दिस टू बी मिसरिप्रेजेंटेड, क्योंकि ये स्प्रेड होएगा, पीपल विल टेक इट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. जब तक आप एक दूसरे के मैप्स को जोड़ के वो नहीं बताएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ठीक है. तो sorry that we will not be able to take all the questions. I will take some super chats and we'll end the show, because I don't want General sir to also get taxed up. यार 1 घंटा 24 मिनट बोलना दम चाहिए. इसको बोलते हैं भारतीय सेना का जनरल. जनरल इतना दम वाला है तो बाकी तो छोड़ दो, फिर तो खड़े मत होना साहब, मार खाओगे. So guys, सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा,
893 लाइक्स हैं, इसको जरा 1000 तो अभी मतलब आप ब्लिंक करो और 1000 तो लेके जाओ सीधा सीधा. दिस शो हैज टू गो वायरल बिकॉज इसके ऊपर लेडीज एंड जेंटलमैन शोज बनेंगे भी, क्योंकि ईच एरिया जो है, अगर आप देखो हमने इसके ऊपर कई चीजों के ऊपर हमने बात कर ली है, कई चीजों पे बात करनी है मेरे को सर से. सो ये जो एक स्ट्रक्चर सर ने समझाया है, इसके ऊपर और शोज बनेंगे, क्योंकि जैसे 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 ये इसराइल का आगे चलेगा, जो मिडल ईस्ट का एक क्वेश्चन है वो बाहर निकलेगा. So there'll be multiple shows that will be made on this presentation. Don't worry, you will Yeah, see these because if slides. you realize, give the credit to the Chinese also, they have realized कि ये जो evolving structure अभी बताया मैंने P6 का, importance of Middle East. अगर मैंने यहाँ से reach out करना है to Europe, Middle East becomes very important. Otherwise, I have to go all the way around the Cape of Good Hope to Europe. जी, तो सर जरा let's take these 5-6 questions. Guys, thank you so much. Please ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को. You can contribute towards the effort by scanning the QR code up there, और आप PayPal यूज कर सकते हैं या फिर सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स भी भेज सकते हैं. Manu Sharma ji, thank you so much for your contribution. Great stuff, Aadi. Great stuff. Respect for General Ryan, sir. Would it be possible for you to do a show on the history of the deep state and critical people running it, linkages with geopolitics? कर चुके हैं already. We have. Manu ji, if you can just email me, मेरा email is in the description. I will give you the links. आप उसको देखिए पहले, and then if you have any specific this things, let us know. If it fits in, we'll be glad to do a show. Yeah, that's not We a have done problem. a few shows already on that. Yeah. Trickster ji, thank you so much. How and where can I get these maps? Mind bending details. Hats off to both of you. Google चाचा, बोलो Google यार, चाचा मैप दिखलाओ. मैप इज वन थिंग, बट यू नो मैं आपको बोलता रहता हूँ कभी कभार कि मैं और सर काफी बात करते हैं चीजों के बारे में. वी कीप डिस्कसिंग दिस काइंड ऑफ स्टफ, क्योंकि और एक चीज याद करिए, जब भी मैं सर से कुछ बात करता हूँ ना, उसके बाद जाके मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ वो क्या रहा है. सो इफ सर इज टेलिंग मी अबाउट अ पर्टिकुलर रीजन, आई विल ट्राई एंड टेक आउट स्टफ. तो ये जो एक स्ट्रक्चर सर ने बात करी थी, हम लोगों ने बात करी थी, उसके ऊपर हमने ये क्रिएट किया था. एंड वो जो ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो बनाया था मैंने पहले, उसके ऊपर फिर देन आई टुक सर्स इनसाइट एंड आगे पीछे हमने उसको ओपन करा है कि ये ऐसे ऐसे होना चाहिए. It So that's began how. with the global structure, Quad, AUKUS, वो सब लेके. हाँ, तो Then we उससे went स्टार्ट हुआ था. backward. या एंड वो तो मैप मैं आपको काफी बारी दिखा भी चुका हूँ. आई हैव शोन दैट टू यू, दैट आई विल जस्ट शो इट यू अगेन. दिस इज द मैप दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. ये तो आप मेरे दूसरे शोज में भी देखेंगे. सो आफ्टर दिस इट वाज बिल्ट अप. Rahul Lakshmanji, thank you so much. Will P6 be final and a permanent shift again? Rahul Lakshmanan ji, there is nothing permanent in geopolitics. That's why I said if you can get it into a stable structure, it will last number of years. Like P1 was a very stable structure till the rise of Christianity and Islam and the spread through the sword, making you. It was the use of religion for gaining geopolitical influence. That's how they spread. And it upset the whole apple cart. It stayed still for some time, 700 years, 800 years, but then it collapsed. But the other shifts did not last long because it was misusing other areas for your own good. It was not permitting other areas to develop. You were sucking the other areas dry. Such a thing doesn't last long. So that is why I said P6, as far as feasible, if you can replicate to P1. You cannot do it exactly like that because geopolitical environments are very highly unstable and in a state of flux. If you can manage that till the level you can manage that, it will remain stable. And at some point in time, it will shift. वो भी पढ़िए ना पॉल कैनेडी का राइज एंड फॉल ऑफ पार्ट्स एम्पायर्स. 400 साल का साइकिल है, साइकिल होता रहेगा. सर वेडनेसडे को ना सर, एक मैं आपसे थोड़ा सा, आपको इफ यू डोंट माइंड गलत मत लेना, थोड़ा सा होमवर्क आपको मैं देता हूँ. एक जगह एक सर एक 4 स्लाइड के अंदर हमारे व्यूअर्स के लिए प्लीज, आपने काफी सारी बुक्स बताई हैं हमको. सो जियोपॉलिटिक्स, चाइना एंड भारत के ऊपर 3 सब्जेक्ट्स में व्हाट वुड बी द रिकमेंडेड रीडिंग आपकी तरफ से? क्योंकि जो सर देखिए, मैं आई एम इन द मिडल ऑफ माय रेम साइकिल ऑफ रीडिंग राइट नाउ.
ठीक है, तो मेरा एडवाइस लेंगे तो आई विल गिव अ वेरी कंफ्यूज्ड एडवाइस बिकॉज आई एम रीडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, सो आई एम इन माय रेल्म साइकिल, वो बिल्ड हो रहा है अभी, इट्स नॉट एट ऑल एनीवेयर। चाइना फिर भी थोड़ा मैंने पढ़ लिया है टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट द रेस्ट आई एम नॉट। अभी मैं वो रॉबर्ट कैपलन की पक्की कर रहा हूँ किताब, उसके अंदर से ये थॉट निकला सर मेरे को, यू नो व्हेन आई रेड दैट रॉबर्ट कैपलन रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग दीस थॉट्स कि यार ओके, लेट्स लुक एट ज्योग्राफी एंड दिस इज द थिंग। तो प्लीज आप ये बना 3 स्लाइड बता दीजिएगा सो दैट बना आर ऑडियंस कैन एक्चुअली रीड व्हाट यू रेकमेंड। जन्नती हूरों का इंचार्ज बेगम, थैंक यू सो मच। आपके नाम ना real reason the real reason is to screw India, and like they did with Germany, Japan, Russia, and now China with Protestant Christian dollar and Catholic Christian euro. Euro never took off, frankly. यूरो के इंचार्ज बेगम जी, यूरो नेवर टुक ऑफ। जोर शोर से बना था और अभी तो पता नहीं, आई डोंट नो आफ्टर ऑल दिस प्रॉब्लम विद यूक्रेन वेदर इट्स गोइंग टू लास्ट आल्सो, वेदर ईयू विल लास्ट, हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, इन व्हाट शेप। Germany, Japan took charge, gave up their charge of security to the US. We have not given up the charge of our security to the US. Like I said, don't compare us with either Germany or Japan or China. They are all aided economies who were given stability to grow. We have had जी no stability यार। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, sanctions हुए हैं, internal fissures को सारा स्टोक किया है, उसके बावजूद you have grown। जब भी उनको झटका लग रहा है कि ये एक देश है भारत जिसको हम दबा नहीं सकते, दिस इज इंटरनल रेजिलियंस ऑफ आवर पीपल ऑफ आवर कंट्री, जी कि वो दबेंगे। ठीक है ना, तो हम उनके जैसे नहीं है। रशिया को अभी तक क्या कर पाया है यार, कुछ नहीं कर पाया है। गलती इन्होंने सबसे बड़ी की थी तब, अगर येल्सिन के टाइम में Gorbachev also wanted to join EU and Europe and NATO and Yeltsin all that. थे, but by then they had sold themselves to the Chinese। स्यापा तो यही हुआ ना। See, Americans, I always say, don't have a long term vision। 79 में पूरा दरवाजा खोल दिया इन्होंने चीन के लिए, 10 साल बाद तो तकरीबन 10-12 साल बाद यूरोपियन यूनियन टूट गया, अपना सोवियत यूनियन टूट गया। उसके बाद तोड़ने के लिए कर रहे थे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि एंड स्टेट उसके बाद क्या करना। दैट्स वेयर द होल प्रॉब्लम लाइज। सो दैट इज व्हाई अभी ये जो बन रहा है हमारा P6, सोच समझ के हमें एंड स्टेट देखना है। वेयर आई से एंड स्टेट इज लाइक व्हाट वी हैव स्टेटेड, स्टेबिलिटी and security and growth for all. So for that you need stability in the region, and that is what you have to work for, and that is why both of us are saying कि 20-30 साल कहीं नहीं गए इसको बनने में, अभी तो बनने बहुत में, मेहनत, बनने बहुत के बाद मेहनत स्थिर होना है। That is why I said end of this century। जी। एवरेज मिडिल क्लास गेमर जी, थैंक यू सो मच। राजीव सर, मजा आ गया आज की क्लास में, थैंक्स अ टन सर। थैंक यू। राहुल लक्ष्मण जी, श्री राजीव आचार्य देवो भव। सर थैंक यू। ओ यार, सारे मेरे गुरु को मना, तुम सारे हड़प के रह जाते हो, ये क्या है? प्राइवेट गुरु है ये सबके नहीं है। The trickster, thanks again. Loss of adjectives. Burma against, please. Yeah, we will cover Myanmar. We will do that because देखिए, अभी थोड़ा और I इवॉल्व हो जाएगा, हाँ देखते हैं। एग्जैक्टली एक आई थिंक ट्रिक्स्टर आपने मुझसे पूछा था पर्सनली भी, लेट द सिचुएशन इवॉल्व, क्योंकि अभी बहुत सारा फ्लक्स है एंड यू नो इट्स नॉट एज क्लियर एज इजराइल और यूक्रेन यार। वहां से न्यूज नहीं आ रही है, वहां पर इतने कोई जर्नलिस्ट नहीं है, इतना इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर नहीं है, सो लेट्स वेट। एनीथिंग दैट यू विल से राइट नाउ वो उड़ता हुआ जाएगा। सर, मैं वंस अगेन आई एम सो ग्रेटफुल दैट यू हैव टेकन अप दिस सब्जेक्ट। ये बड़ा जबरदस्त, वेरी वेरी अमेजिंग। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड रियली हैप्पी अबाउट दिस। यार गाइस, वेडनेसडे दोपहर को आई विल पुट आउट द लिंक। मैं मंडे या ट्यूसडे को ही डाल दूंगा वो लिंक, सो आपको याद रहेगा।
वेडनेसडे दोपहर को वी विल कैच जनरल नारायण, जो हम आपके सवालों के जवाब देंगे और मेरे भी थोड़े से सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं अभी इस टाइम पे। सो प्लीज सबसे मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, गो थ्रू दिस प्रेजेंटेशन अगेन, आप इसको देखिए दोबारा विदाउट द चैट बॉक्स, सो दैट आप इसमें कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। गो थ्रू दिस थिंग अगेन एंड पिक्स अप योर क्वेश्चंस, ठीक है? आई विल पिक आउट द बेस्ट यहां से, बट आप अपने भी क्वेश्चंस, स्पेसिफिक क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू द ग्लोबल ऑर्डर, आप यू नो एक बारी और देखेंगे, देन यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ यू नो कम अप विद क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड इट। एंड ट्रस्ट यू मी गाइस, अगर आप ये मैप समझ जाएं, आपको आगे का ग्लोबल ऑर्डर किस तरफ जा रहा है, जो सर हमको बताते रहते हैं, कौन सी वॉर कहां पर, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट मच बेटर। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। जय भारत।